Hello friends, welcome back to my educational channel GravityTech. In last videos, we have already covered static stack, static queue, singly linked list, doubly linked list. In this video, we will cover dynamic implementation of the stack. Some of the things which will be covered in upcoming videos are dynamic queue, circular linked list, circular queue, reversing a linked list, trees, which covers pre-order traversal, in-order traversal, post-order traversal, graphs. Okay, so all these contents are going to come in the upcoming videos. If you like the contents, please do like the video and subscribe to the channel to get updates about new videos. Also share it with others as well so that it will help others too. Okay, now let's see what exactly are we going to cover in today's video. Okay, so what are the session objectives? We will quickly go through what are the stack concepts. We have already seen it. Stack के concept हम लोगों ने already देखे हैं last पूरा एक जो video बनाया था हम लोगों ने, right? And then we also had a static implementation of the stack using the arrays. But यहाँ पे हम लोग very quickly वो पूरे concepts recap करेंगे. Then we will have a practical session of dynamic implementation of stack of integers. And then what exactly are we going to cover in the next sessions, right? So what is a stack? Just to maybe quickly recap, right? A stack is a linear data structure in which the insertion of a new element and removal of the existing element takes place at the same end, represented as what? Top of the stack. मतलब stack ऐसा एक linear data structure है जहां पे नया element स्टैक के अंदर रखना या फिर स्टैक से बाहर निकालना ये एक ही एंड से पॉसिबल होता है. उस एंड को हम टॉप बोलते हैं, टॉप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, टॉप ऑफ द स्टैक. Since both insertions and deletions of the elements happen at the same end, it basically required to maintain the pointer at the top of the stack, which is basically last element inserted because we can access the elements only on the top of the stack. That means element inserted at the last will be removed first and the element inserted first will be removed last. What does that mean? The stack is LIFO, last in first out, or FILO, first in last out data structure. Okay, see, so this is how it is. See, now let's say this is your stack and you have a b c elements, right? So when you insert, जब आप पहला एलिमेंट a इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले a इंसर्ट करने के बाद वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. बाद में आप b उसके ऊपर रखोगे, फिर c उसके ऊपर रखोगे. जैसे आपने a इंसर्ट कर दिया, टॉप a को पॉइंट करेगा. b इंसर्ट किया, टॉप b को पॉइंट करेगा. c इंसर्ट किया, टॉप सी को पॉइंट करेगा. इसका मतलब जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया हुआ है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा. पुश मतलब इंसर्ट द एलिमेंट, पॉप मतलब क्या? एलिमेंट को रिमूव करो स्टैक में से. सो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट रखा है आपने वो सबसे पहले निकलेगा. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले गया हुआ है वो सबसे लास्ट में निकलेगा. सो इट इज बेसिकली लिफो और फिलो ऑर्डर. Now, what are the basic operations on stack? This we have already seen it. Push operation ये होता है to insert an element onto the stack. Pop operation ये होता है to remove an element from the stack. Top operation ये होता है to get the top element of the stack. Correct. Now, is empty will basically tell you whether the stack is empty or not. Right? If the stack is empty, it will return true. Otherwise, it will return false. Size, it will tell you the current size of the stack. Right? Okay. Now let's look at the practical example. Stack of integers but dynamic implementation using the linked list. Okay. Now let's see how to do that. Yeah, let me get the IDE. So this is the dev++ IDE. Let me open a new source file. Let me save this file with some name. Okay, we'll save it once maybe we have some code, right? So what exactly the operations are we going to perform on the stack? Let's try to put that all in comments, right? File level comments. So this is going to be a dynamic implementation of a stack of integers. Correct. So what we need, let's say data structures
right? Or variables, what are needed, correct? So very first thing we would need a node structure, correct? Structure data, structure which will hold node data. Now this structure will have integer data and next pointer, correct, to the next node. Now what else you will need? You will need a top pointer. जब भी स्टैक आता है, स्टैक में क्या होता है, टॉप पॉइंटर होता है. ये हो गए वेरिएबल्स. नाउ फंक्शंस, what you will need the functions for, right? So the very first function you will need a push, then you will need a pop function, you will need a display function, you will need a size function which will tell you the size of the stack. You will need a underflow condition function, right? That means is it empty, correct? Is empty function, maybe is empty function, correct? Now जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इज एम्प्टी बोल रहे हैं, डू वी नीड इज फुल यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये डायनेमिकली है, कभी भी फुल नहीं होने वाला है. जैसे ही हम अब नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे, वो और नया स्पेस एक्चुअली एलोकेट करके वहां पे रख देगा. सो व्हाट इज नॉट नीडेड? नॉट नीडेड इज व्हाट? ओवरफ्लो कंडीशन की जरूरत नहीं है, करेक्ट? सो फुल स्टैक कंडीशन इज नॉट नीडेड, correct? So this is what maybe just a kind of summary what we need and what we not need. So next we will have a preprocessor section. What is a preprocessor section? Hash include stdio.h for printfs and all, right? Hash include, then stdleap.h, right? This will basically tell you for the exit function, right? ये हो गया preprocessor section. Now as we need a structure data type, right? Struct node लगेगा हमें, और उस नोड में क्या होना चाहिए, इंटीजर डेटा होगा. एंड वी आल्सो नीड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, करेक्ट? अब ये हर बार स्ट्रक्ट नोड लिखना, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो लेट्स यूज अ टाइप डेफ, जो फीचर है, फंक्शनलिटी है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, इसको बोल देते हैं हम नोड. सो जहां जहां पे हम स्ट्रक्ट नोड यूज करेंगे, उसके जगह पे विल यूज a node. Now this is what a data is. Now you know, right? We give the menu. हम यूजर को एक मेनू फंक्शन देंगे which will basically tell what exactly the operation user want to perform. So int choice is equal to what? 0. So this we have already seen. हम लोगों ने ये p जो last time लिखा था मेनू फंक्शन, वही लिख रहे हैं हम लोग. So we will use the do while loop, correct? While कंडीशन रहेगा कुछ, तो यहाँ पे चॉइस वाला कंडीशन रहेगा, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू प्रोवाइड? printf. So this will be what? A stack menu, correct? ये हो गया stack menu. stack menu में क्या क्या रहेगा? In a stack menu you will basically have an option. The first option what? Push an element on the stack, मतलब insert करो element को, right? Then the second option you would have, I'm just maybe doing control C, control V, correct? Second option you would basically have it like this, pop an element from the stack, मतलब element remove karo, correct? Then third would be like having a size of the stack, size of the stack. Then let's maybe just, the fourth option would be like a display, correct? Display stack.
ये हो गए 4 ऑप्शंस. नाउ फिफ्थ ऑप्शन तो सर्च हो सकता है, लेकिन let's cover the only 4, right? And next will be what? 0, that is exit option. अगर यूजर ने इंटर किया 0 तो वो एग्जिट रहेगा. Then we will ask user to enter the choice, enter the choice, right? और valid choice में भी valid choice क्या है? valid choice होनी चाहिए 0 to 4, right? 0 to 4, 0 से नंबर कम भी नहीं होना चाहिए और 4 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट. सो दैट कंडीशन वी विल, बट अगर यूजर इंटर करेगा तो वी नीड टू सेव दैट समवेयर, करेक्ट. सो यूजर ने इंटर किया, दैट दैट विल गो इनटू द चॉइस, करेक्ट. Now once it goes to the choice, you basically need to check whether choice is correct, right? Whether it is less than 0 or greater than 4. अगर ऐसा है, then we will basically just simply print a message saying error, right? Incorrect choice, and enter the correct choice. This is what maybe will give message to the user. Now same thing we need to continue. जब तक यूजर 0 और 4 के बीच में आंसर वैल्यू इंटर नहीं करता, तब तक एट द एंड वी नीड टू बेसिकली स्टार्ट दिस लूप, कीप दिस लूप, करेक्ट. एंड देन वंस यूजर ने जो भी इंटर किया, राइट, इट विल बेसिकली रिटर्न द चॉइस. सो ये हो गया मेनू फंक्शन, करेक्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द मेन फंक्शन. ओके, या, so let's try to write the main function. Int main, correct, return 0. Now what you need, a node star top, जो top pointer चाहिए हमको, that will be null, right? अगर नया element insert करना है तो new element, correct. We also use one more stuff, if you remember, right? More means whether user want to perform the more operations, correct. How, and we keep on asking user, like whether the user wants to perform the more, right? And that will be what? Printf, like this, enter, or do you want to perform more operations? 0 for no and 1 for yes. जिसने भी लास्ट के वीडियोस देखे हैं, they will understand what this means. Okay, so I would encourage कि आप लास्ट की वीडियोस देखो एक बार, right? So scanf %d and %more, correct. So जब तक more यहाँ पे 0 नहीं इंटर होता, तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा. Now what exactly we need to do? Switch, correct. Switch menu. यहाँ पे क्या होगा अभी? यहाँ पे menu function call होगा. The menu function will call and it will basically return the choice. और वो choice क्या रहेगा? 1 2 3 4 इंसर्ट करना है एलिमेंट स्टैक पे, स्टैक से एलिमेंट रिमूव करना है, या फिर स्टैक का साइज चाहिए, या फिर स्टैक डिस्प्ले करना है, राइट. दिस इज व्हाट द मेनू विल बी, और उसके हिसाब से भी हमको केसेस लिखने हैं. सो केस 1, case 1 break, correct. Now how many cases do we have? We have actually like 5 cases. Okay, so case, let me just copy these things, right, so that just to save some time. Case 4, and then case 0, don't we don't need the break here, right? And we might not need the case 0 here, but yes, let's have it. So case 1, case 2, case 3, case 4. Okay, now what is the case 1? Case 1 means insert the new element, correct. So we will ask user to enter the element. User want to insert the new element. User को एक element insert करना है stack पे. So enter the element to be
inserted on stack. Now user will enter the element and we need to use then scanf to catch that. Correct. That will be a element here. Is it? Now once user enters the element, let's try to write a call of function, right? Which will basically have top and element. Now we need to define this function. Correct. हमको क्या करना है function define करना है. So let's try to define this function now. Okay. So push is the function which basically takes top address of top and the element as a input, right? Input arguments, and then use some logic to push that element on the top of the. So here it would be, yes. So this push function will not return anything. ये कुछ भी return नहीं करेगा. Address of top ले रहे हैं, so this should be what? Node star star stop. Correct. This would be what? Int element. Is it? Now हमको नया element ये वाला insert करना है, लेकिन ये element ऐसे कैसे insert कर सकते क्या? नहीं. इसमें क्या है? When we say top, right? There is a node 1, node 2, इस तरीके से है ना. हर एक नोड के अंदर क्या है? डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर. सो डेटा ये होना चाहिए और नेक्स्ट पॉइंटर वो होना चाहिए. सो हमको नया नोड चाहिए. व्हाट वी नीड? अ न्यू नोड. करेक्ट. सो वी बेसिकली नीड टू allocate the memory first. So that will be what? Malloc. और कितनी मेमोरी allocate करनी है हमको? नोड इतनी मेमोरी हमको allocate करनी है. लेकिन malloc रिटर्न करता है void star. लेकिन हमको void star चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? node star चाहिए. सो ये जो भी void star वहां से आएगा इसको हमको टाइप कास्ट करना है नोड स्टार में. करेक्ट. और जो न्यू नोड का जो डेटा है, करेक्ट, डेटा में क्या आ जाएगा? एलिमेंट जो हमको इंसर्ट करना है. और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, करेक्ट, दैट विल बी व्हाट? अ नल. सो वी शुड बेसिकली हैव दैट एज अ नल. या सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ अभी हम लोगों ने नया नोड बना लिया. ये हम लोगों ने क्या बनाया? नया नोड बनाया. करेक्ट. अभी इस नोड को हमको टॉप पे इंसर्ट करना है. देखो अगर इस तरीके से है, राइट, नोड 3, नोड 4, इस तरह से आपका स्टैक है. स्टैक में सबसे पहले गया था लेट्स से नोड 4. करेक्ट. नोड 3 उसके बाद इंसर्ट किया, नोड 2 इसके बाद इंसर्ट किया, नोड 1 उसके बाद इंसर्ट किया. मतलब टॉप किसे पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे. तो हमको यहाँ पे इस नोड को रखना है. सो नया नोड कहाँ जाएगा? न्यू नोड विल कम हियर एंड देन टॉप विल बी पॉइंटिंग टू दिस. लेकिन सो सिंपली न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का नेक्स्ट वुड बी व्हाट? टॉप. एंड देन स्टार टॉप वुड बी व्हाट? न्यू नोड. डन. सी सिंपल सा फंक्शन था. न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमको टॉप को पॉइंट करने को लगा दिया, राइट. एंड देन न्यू नोड जो है उसको स्टॉप बनाना है. सो न्यू नोड इज टॉप. दिस इज डन. दिस वाज द पुश फंक्शन, राइट. अभी हमको पॉप करना है, राइट. व्हेन वी वांट टू मे बी सेकंड क्या है? रिमूव द एलिमेंट. रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट. नाउ व्हेन यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट, राइट, सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये स्टैक एम्प्टी तो नहीं है. लेट्स ट्राई टू राइट अ फंक्शन. सो हम पॉप, और ऑब्वियस है हम कहां से रिमूव करेंगे? टॉप से रिमूव करेंगे. करेक्ट. सो लेट्स गो एंड ट्राई टू राइट अ टॉप पॉप फंक्शन. तो पॉप फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, राइट. ये रिटर्न करेगा नथिंग. एंड देन this will be what? Since it is address of top, it will be what? Pointer to top, right? Pointer to pointer top. Now what exactly pop? अगर आप रिमूव करना चाहते हो एलिमेंट तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो नल है या नहीं. लेकिन अगर वो नल नहीं है तो आपको जो एलिमेंट रिमूव करोगे आप, वो कहीं और जगह पे तो स्टोर करना पड़ेगा. तो आप टॉप में से, स्टैक में से निकालोगे एक नोड. अगर वो नोड निकाला तो नोड वो किसी और जगह पे तो स्टोर करना है. सो इसलिए आपको एक टेम्पररी नोड लगेगा. देन टेम्पररी नोड विल बेसिकली पॉइंट यू वेयर? टॉप. नाउ very first thing you need to check, like temp is null.
अगर temp null है, what does that mean? If temp is null, what does that mean? It is empty, correct? So this is an underflow. What does that mean? Stack is empty and element cannot be removed, correct? But अगर stack empty नहीं है, अगर stack empty नहीं है तो क्या? अगर stack empty नहीं है तो हमको top निकालना है. What we need to do, right? Star top is equal to what? Star top next. यहां पे इसकी जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, यहां पे जरूरत है बिकॉज प्रीसिडेंस स्टार और ये जो ऑपरेटर है प्रीसिडेंस की वजह से हमको ये रखना पड़ता है, राइट? अभी क्या होगा अगर आपके पास स्टैक कुछ इस तरीके से है 12 14 15 करेक्ट 89, अभी आपका टॉप जो है ये यहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है और टेम्प भी यही पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन आपको रिमूव करना है इसको, तो टॉप अभी यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई व्हाट स्टार टॉप इज इक्वल व्हाट स्टार टॉप नेक्स्ट. तो यहाँ से ये टॉप निकलेगा, करेक्ट, और टॉप चला जाएगा यहाँ पे, राइट? और अभी टॉप तो आगे निकल गया तो हमको ये तो निकालना है, लेकिन इसका नेक्स्ट अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है. सो हमें टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प नेक्स्ट शुड बेसिकली बी व्हाट नल, करेक्ट? टेम्प नेक्स्ट नल हो जाना चाहिए ताकि अभी ये इंडिपेंडेंट हो गया. दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट. अभी हम इसको बोल सकते हैं कि रिमूव कर दिया. सो बिफोर यू फ्री इट आउट, राइट, यू शुड बेसिकली डिस्प्ले कि भाई हम लोगों ने रिमूव कर दिया है. सो एलिमेंट रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक इज %d. और क्या रिमूव किया हम लोगों ने? टेम्प का डेटा, करेक्ट, और फिर उसको फ्री कर दो. वी नीड टू बेसिकली फ्री द टेम्प सो दैट जो भी आप लोगों ने ये वाला एलिमेंट है इसका मेमोरी फ्री हो जाएगा एंड देन यूजर विल बी एबल टू यूज दैट मेमोरी, राइट, फॉर अदर थिंग्स दैट प्रोसेस, राइट? सो ये हो गया पॉप. नाउ वी गॉट अ पॉप फंक्शन, we got a push function, we got a menu function, right? Now let's see the next one. Next one is like size, right? So let's maybe try to print the size. Printf stack size is %d, correct? So size of stack. Now what you will basically send a top here, correct? यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पास किया, यहाँ पे नहीं किया. क्यों? बिकॉज मे बी वी एक्चुअली वांट टू चेंज दिस, राइट? यहाँ पे हमको चेंज नहीं करना है, खाली इसको इटरेट करना है, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू राइट दिस फंक्शन size of, correct? So it will return integer, it will have the node star because यहाँ पे address of नहीं हमने send किया है. Now let's take node star temp which will basically point to top. Int length, let's take it as a 0 while temp is not equal to null. इसको खाली ट्रैवर्स करना है. लेट्स से आपका अगर स्टैक कुछ इस तरीके से है, राइट? सो टेम्प पहले यहाँ पे था तो लेंथ 0 है, टेम्प आगे चला जाएगा लेंथ 1, राइट, आगे चला जाएगा लेंथ 2 3 4 5 इस तरीके से. सो लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट प्लस प्लस एंड देन टेम्प भी मूव होना चाहिए आगे, करेक्ट? टेम्प इज इक्वल व्हाट टेम्प नेक्स्ट, देन यू जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर इट्स अ लेंथ, करेक्ट? सो ये हो गया साइज ऑफ. अभी साइज भी हो गया. अभी हमें फोर्थ करना है डिस्प्ले, करेक्ट? सो डिस्प्ले स्टैक, डिस्प्ले करने के लिए अगेन यू नीड अ टॉप, करेक्ट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले द टॉप. Let's not top, display the stack. Yeah, so let's try to write that function here, correct? It will not return anything, void
correct. And then this will be what? Node star top. So very first thing you will check whether the list is this is empty, right? The stack is empty. So star temp is equal to what? Top. Very first thing. So if temp is equal to null, we will have a message like this: printf stack is empty. करेक्ट. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें ट्रैवर्स करके डिस्प्ले करना है. करेक्ट. सो व्हाइल temp इज नॉट इक्वल टू नल, ये वाले एलिमेंट्स क्या करो? प्रिंट करो. प्रिंट एफ %d. Let's try to display it like on new lines, right? %d. And then the temp data. But once temp data is printed, you need to basically move temp next. Okay, temp is equal to temp next. You need to basically give a kind of good message as well to user, right? ताकि उसको readable लगे. Stack, current stack is right. Then this will be new line. Say this is done. So a display भी हो गया. So what we basically had in menu, push हो गया, pop हो गया, size हो गया, display हो गया. Now exit, right? Now let's see exit. So 0 is exit, means exit 0 function and then done. So this is how the program looks like. Let's try to run it. हो सकता है रन होते होते कुछ टाइपो मिस्टेक्स हो जो हम अभी रिजॉल्व करेंगे at the time of run. Okay, so don't worry about it. I'm running it now. So it says scanf %d @element, right? Then what exactly it is, right? See element का spelling यहाँ पे हम लोग यहाँ पे element यूज करें, यहाँ पे e छूट गया था. It says case 0, यहाँ पे semicolon हो गया है. This should be colon. See when you code it, these things happen. But you need to basically know, have that skill, right? Troubleshooting skills बहुत important होते हैं. देखिए अभी रन कर दिया हम लोगों ने, यही मिला. Let's try to display the stack. It says stack is empty. Do you want to perform more operations? Yes. Let's maybe try to see what is the stack size. Stack size is 0. अभी तो कुछ भी enter नहीं किया हम लोगों ने, right? Now let's try to pop the element, right? Underflow stack is empty क्योंकि अब तक हम लोग कुछ भी insert ही नहीं किया, तो delete कहाँ कैसे करेंगे, right? Yeah. Let's try to insert now the elements, right? So 1, I would like to insert the element, let's say 34. Now let's try to display it. 34, correct? Let's try to insert the another element, 56. Let's try to display. See 56 gone on the top, correct? Let's try to insert again another element, 67. 67 again goes on the top, right? See, now let's try to pop the element. When it will be right, it will basically remove the element 67. 67 उसने remove कर दिया, correct? Now let's try to display again. See 67 चला गया. Let's try to see the size of the it, right? So when you say size is tag 2, right? Let's try to push the element again, 90. Now when you try to display it, it will show 90, 56, 34. Let's try to pop it, right? 90 निकलेगा, right? Let's try to pop all, then 56. Let's try to pop next, right? Now let's try to pop again. It is underflow, is it? So this is how it is. So hopefully you understood what is the dynamic stack. Yeah. Let's go back to the presentation now. Yeah. So we saw the practical example of stack of integers dynamic implementation. Now this is what actually I had it from this video. Next video will have a dynamic implementation of queue of integers. Okay. So guys, if you like the contents,
make sure that you hit the like button of the video, subscribe to the channel to get updates about the new videos, and share it with others as well so that it helps a wider audience. I, I wish you the happy learning with the GravityTech. Thank you.